उसको कोई खरीद भी नहीं रहता, तो पंजाबी फिल्म है, ये कौन देखेगा। जब सिद्धार्थ ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगेन वक्त लगता है कि पता नहीं कब कौन सी फिल्म बनती है, ज़माना बदलता रहता है, और अचानक नेटफ्लिक्स आई, उन्होंने कहा हम ये बनाना चाहते हैं, ना उस देर। लड़की खूबसूरत है तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, वो दोनों हो सकती है ना। मोनिका को देख लो, him. He is the most wonderful, gentle, patient person I have worked with. You know, he's worked under enormous stress, and it's not been easy to make this movie. There's been all kinds of hurdles, but he never lost his center. He never let us feel what kind of pressure he was under. And it was just, he's also so receptive to what you are able to bring. So, you know, एक होता है ना कि मैं डायरेक्टर हूँ, ये मुझे ऐसे चाहिए, वो कभी नहीं था. He is very open to seeing what your interpretation is of the line, the moment, the scene. And we've had many chats with him, and we've done scenes very organically and beautifully. So thank you, Sid. Thank you, dear. Thank you. And thank you for mothering me and all of you all. And Sapna, who's not here, because this would have not been without Sapna and the entire team at Alchemy. Yeah. But you were in great hands also. और इतने साल all the women who were there to like Hold your hand. hold my hand, and I would smile and say it's all good. and you pulled You it. see, end of the day, a film is a film because it's a director's film. We just have to see that we work in that parameter and we don't go outside that, and that's what it is. And I think he's done a great job, and I'm sure you're going to love it. It's amazing, and to be working with such stalwarts, such amazing actors. सर धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं हमने, इतने साल दिए हैं तब जाकर यहाँ पर पहुंची गई है बात. A round of applause for the director Siddharth right over here, ladies and gentlemen. मैंने ये आप देख सकते हैं कोर्ट रूम, आपको मैं भूल नहीं जाऊं क्योंकि आप एक कोर्ट रूम में हैं, और ये सामने आपके जो कैवल रखा हुआ है ये किसी खास कारण से यहाँ पे रखा हुआ है. आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, और बस एक सवाल आपसे और मैं पूछने वाला हूं, जिसके अंदर मुद्दा यह है कि सर क्या इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाना चाहिए. अगर आपको, मैं एक मुद्दा उठाऊंगा, आपको लगता है कि अगर उस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाना चाहिए तो आप कैवल उठा के यू विल बैंग इट. ठीक है सिद्धार्थ सर, आपकी बात करी तो आप ही से स्टार्ट करते हैं. आप पे चार्ज है, पहले लाइट दे दूं आपको, एक सेकंड. हाँ, आप पे चार्ज ये है कि फिल्म का बजट अप्रूव करने से पहले भी आपको घर की फाइनेंस मिनिस्टर सपना जी से क्लियरेंस लेनी पड़ती है. All the time. How was that working with her, and how? Sir, all the time. Sapna decides everything in my life. क्योंकि अभी 30 साल हो गए हमें, तो फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब कुछ वही है, वही डिसाइड करती है, और उसी के इट्स ऑल द, एंड देन इन नेटफ्लिक्स मोनिका एंड रुचिका डिसाइड. बहुत अच्छे, चलो ठीक है, ये तो चलो गैवल बैंग हो चुका है. तिलोत्तमा जी, आपसे सवाल है, चार्ज है आपके पर, प्लीज देख लीजिएगा आपको करने के लिए. चार्ज है कि आप हर रोल में इतना घुस जाती हैं कि असली तिलोत्तमा को ढूंढने के लिए सर्च वारंट निकालना पड़ता है. शुड वी टेक दिस मैटर टू कोर्ट? What's with that reputation that, oh, gone in with that? But that is something that you would be proud of, isn't it? Haven't you seen her stockings? I mean, just check them out. She brings the real Tilottama wherever she goes. You can't miss it. Dude. Mantra. Tilly, this is amazing. Okay, sir, sorry sir, हिम्मत नहीं हो रही लेकिन फिर भी बोल देता हूं. चार्ज है कि आपके घर का खाना इतना फेमस है कि देओल फैमिली में मीटिंग्स कम डिनर प्लान ज्यादा बनते हैं. शुड वी टेक दिस मैटर टू कोर्ट? फैन से पूछता हूं, क्या लगता है आपको? क्या करना चाहिए? कोर्ट में ले जाना चाहिए कि सबको खाना अच्छी तरह से खिलाना चाहिए? सबको खाना है कि नहीं खाना है किसी दिन? बट अरे घर पे लोग खाना खाने आते नहीं है, घर पे लोग मिलने आते हैं. जब मिलने आते हैं तो खाना ऑटोमेटिकली सबके लिए होता है. बिकॉज बहुत चर्चे हैं आपके डिनर प्लान्स के एंड देओल फैमिली के फूड लव के बारे में, बट विल स्पीक अबाउट दैट सम अदर डे ऑल्सो. दिया मैम, आप पर चार्ज ये है कि आपने ब्यूटी विद ब्रेन्स का बेंचमार्क इतना हाई कर दिया है कि कंपनीज अब हायरिंग के लिए ऐसे क्राइटेरिया बना रहे हैं. वाह,
Superb. हम ही कर देते हैं ले लो. But it is what प्लीज मैम पहले आप बोले. एक तो ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला जो टर्म है मेरे को बहुत ऑफेंसिव लगता है क्योंकि ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि अगर लड़की खूबसूरत है तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती. वो दोनों हो सकती है ना, मोनिका को देख लो. तो पैजेंट वाले क्वेश्चंस अभी तक चल रहे हैं. हाँ, सो दैट इटसेल्फ शुड बी अ मुद्दा दैट शुड गो टू कोर्ट. बहुत अच्छे है. ये हुई ना बात. व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट. एब्सोल्युटली. मोनिका मैम, आप पर चार्ज है कि नेटफ्लिक्स ने इंडिया का बेड टाइम परमानेंटली पोस्टपोन कर दिया है. बस एक एपिसोड और बोलते बोलते सुबह के 2 बज जा रहे हैं. शुड वी टेक दिस मैटर टू कोर्ट? एक्चुअली नॉट एट ऑल, क्योंकि हम तो दिन में भी आपको देखने का वो एवरीथिंग इज अवेलेबल. आप दिन में देखिए, बस सारा टाइम देखते रहिए. वेल सेड मोनिका. एंड मेरे सवाल इसी के साथ जज साहब खत्म होते हैं. मैं सवालों की तरफ बढ़ना चाहूंगा. सवाल अगर ऑडियंस की तरफ से कहीं से आना चाहे, वी आर वेरी हैप्पी टू टेक अ क्वेश्चन और टू. 3 hands yo. Yes sir, can we also pass on the microphone over there so that we can hear you properly? Where's the voice coming from? Hi. Right over there. Yes ma'am, Yeah. please. Do you mind please getting up if we could see you? Yeah. I'm Ashu from Filmy Beat, and firstly, congratulations to the entire team. What a fab trailer we just witnessed. And my question is to Siddharth Malhotra, sir. Courtroom drama as a genre itself is very challenging. What was your biggest challenge in creating this courtroom drama with such ensemble star cast? And what did each of this brilliant actor bring to the world of ICCA? I just, in a way, answered that. But the biggest challenge for me, ma'am, was like I said, when you have Sunny sir, Akshay sir in a film, there is a certain amount of stardom and fandom that they bring. So you have to catch the right tone and pitch with Diya, with Tilotuma, on also the film that I'm trying to say, because I have a certain language of storytelling, may it be Hichki, may it be Maharaj. So to keep that sensitivity and to keep the characters human and real and not go so melodramatic, that was the challenge. Finding the right sur to the film, और उस सुर में कहानी को कहना और किरदारों को सच्चा रखना ताकि इफेक्टिव व्यूइंग हो जाए, and also to keep it relentless. So I had to keep all of that correct. जी. Thank you. Moving towards the next, please. Hi. Somebody from here. Yes ma'am, could Hi. you please get up? My name is Monica. I'm from Hindustan Times. Nice to meet you all. The trailer looks great. My question is to Tiluma and Monica. Interestingly, ICCA looks amazing already. I want to know that why do you think that this was the courtroom drama that you wanted to do, and what was it like facing off Sunny Deol? Because obviously आपको 25 साल भी लग गए, आपने starting में कहा, and also he is a fierce man on screen. So what was that something that was very interesting about him that you loved? And Monica, why did you think that ICCA was something that needed to be on Netflix, on streaming? Because this also feels like something that could be seen on big screen as well. Thank you. Monica, you first. I think, there is this polarization or hierarchy that is seen. Oh, this film looks too good, so it should be a theatrical. Or this film looks too intense and, in world, so it should be on streaming. ऐसा कुछ भी नहीं है. I think good films are good films. And streaming per, the kind of audience that you have now on streaming, it's the largest set of audience, whether in our country or whether across 192 countries and counting. There is an opportunity for our talent, our storytellers, our actors, artists, music directors, everybody to actually be able to showcase their talent. Streaming is also, I feel it gives an opportunity to a range of artists to come and, share their talent with their audiences, their fans. This was a story which is very immersive, it's very intense, it hits all the right notes of emotion, justice, and we were very excited to make it as our biggest Netflix original film. And I think just the size and scale of audience available on streaming today, I think this film deserves it. Hello. Just
Hi. Just Neetu a second, Singh. ma'am. Just a second, ma'am. Tilotoma, you want to take that question? Yes, thank you for asking. I'd never played a lawyer before. As an actor, one is hungry to do things that one hasn't done before, because you tend to get cast for the last thing you did, because people don't want to take a chance. If she did that well, let's just milk that cow until the cow has nothing more to give. And I didn't want to get bored doing something I love so much. So that was the reason, one big reason for saying yes. The second reason for saying yes was, at my age, I want to like the people I work with. And because if I don't like them, I can stay at home. I have a beautiful home and I have a beautiful family. And I don't need to leave them and go to work with people I don't respect. And I really respect Siddharth, our director. And I respect him because we don't know each other at all. We are not friends. We've never met before. But right from the first call, the care, the respect I felt, I was very grateful for that. There was no talking down, even though, you know, you had actors and stars like, you know, Sunny Deol and Akshay Khanna and Dia Mirza in a film. I was not made to feel like I was some, you know, decoration, a middle class decoration, you know, which I usually get cast for. It was, you know, a woman, a strong woman. And so that was another powerful reason to do it. And I think the third was that I have not done a film of this kind of grammar and this kind of pace. And my husband really told me, if you want this marriage to last long, please stop taking yourself so seriously. And please do some comedy. So for his sake, I wanted to do something with comedy, which was not this film, but like action and a, you know, thriller and high octane. And Ikka satisfied that. So for the sake of my marriage, that's another reason. And of course, the wonderful actors and my loyalty to Netflix. In many ways, they bet on me when others didn't. Yeah. Thank you, Tila. Thank you very much. Next, yes, ma'am. नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर जी। पहले तो ट्रेलर बहुत कमाल है, आप सबको शुभकामनाएं। मोनिका, स्पेशली आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी बिकॉज 29 साल के बाद सिनेमा की जो दो दिग्गज आप लेकर आई हैं स्क्रीन पर, उन्हें देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सनी जी, सच में ट्रेलर बहुत कमाल है, आपकी टीम को पहले बधाई। और मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि एक दामिनी को रिलीज़ हुए बहुत साल हो गए, आपने अभी भी मंच पे कहा कि वकील का जो आपका किरदार है वो उसके बाद से आपने की नहीं है, मुझे लगता है 33 साल से ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद दामिनी का वो लॉयर का किरदार इसमें हमें देखना तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए कितना अलग था, और जो आपके डायलॉग हैं 2.5 किलो का हाथ वो तिलोत्तमा ने कहे हैं, वो आपके लिए कितना कुछ अलग था, और आपने कुछ उनको टिप्स दिए इसके लिए, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। 2.5 किलो के हाथ को ये डायलॉग कहाँ क्या बोलूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे इतने सवाल हो गए कि मैं सवाल ही भूल गया। दामिनी जब मैंने की थी वो फिल्म, वो राज संतोषी था और हमारी पूरी टीम थी, मेरे दोस्त थे जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। और उस वक्त मैं चाहता था कि मैं भी इस फिल्म में हूँ, और मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, तो एक छोटा सा कैरेक्टर था उनके हिसाब से। तो उन्होंने कहा तुम करोगे? मैंने ज़रूर, मेरे को आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। लेकिन कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो फिल्म इस तरह से होगी और मेरा कैरेक्टर ऐसे बन जाएगा, लोगों के दिल में बैठ जाएगा, मुझे कुछ उसका अंदाज़ा नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूँ आई एन्जॉय डूइंग फिल्म्स इज़ बिकॉज आई वांट टू डू द कैरेक्टर्स एंड आई डू नॉट नो हाउ फार आई विल रीच और आई वोंट, बट उसकी जर्नी इतनी खूबसूरत होती है कि दैट इज़ माई हाई। और दामिनी ने आप सबको उस फिल्म का फ़ैन बना दिया, और बट उसके बाद मुझे हमें मौका नहीं मिला फिर से कुछ इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह का कोई रोल आए। और जब सिद्धार्थ ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगेन वक्त लगता है कि पता नहीं कब कौन सी फिल्म बनती है, ज़माना बदलता रहता है। और अचानक नेटफ्लिक्स आई, उन्होंने कहा हम ये बनाना चाहते हैं, आई वाज देयर। और रही बात 2.5 किलो के हाथ की, आई थिंक
जब हम ये डायलॉग की बात कर रहे थे मैं बोला आई मीन इट प्लेस टू द गैलरी डेफिनेटली बट इट इज समथिंग विच यू गोना डू इट एंड शी डिड इट ब्यूटिफुली या इट इज अ ओन बिकॉज शी सेड इट Hello, Dia. Hi. Jaya from Galata, India. Hi. So in Ikka, we see that there is an emotional journey as well, you know, of the family, not just the courtroom drama. I really want to ask you as a mother, did that hit you differently? So it's a character that anchors the story, and it's always really, really interesting to play a part that anchors the heart of the story, and it can go in any direction actually. But it was wonderful. I really enjoyed every moment. It was tough because there was a lot of raw emotion. There were lots of, I mean, the octave of many of the scenes is pretty high in terms of just feeling the moment. I think for me, some of the most special moments are the silences that I share with my daughter and I share with my husband. And I really, really enjoyed that scene with Akshay Khanna. It was so much fun. Yeah, I really missed out on doing a scene with Tilly. Yeah, I was like, Sidhu, koi flashback ka scene nahi ho sakta where we could, you know, have. But she's been not just a mother in the lawyers. film. She No, has she's a much lawyer. more. She's an She's an ex-lawyer. ex-lawyer. She's an She's ex-lawyer. a thinking partner. She's a very, you know, she's a woman who's made her choices. And and many of her choices have been difficult, as is common for most women. So I feel like a lot of her lived realities are truths that we all share as women. And yeah, it's always nice to be able to play parts that are honest. Thank you. Hi, Dia. Here. Just a second, please. Hi. Here. Hi. Hi, Bhavneet here. Just want to ask you, जो यहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं, everybody is saying दिया ने जो ट्रेलर में वो अक्षय को दिया है, everybody is talking about it. I just want to know that how are you actually feeling? क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद everybody is going to talk about it. I don't know if everybody is going to talk about it. I'm actually more worried about how I'm going to get am I going to be in trouble? Because I'm very scared. His fan following is so incredible. But when you see why the are you scene, so worried? Why? You're playing my wife in this I film. know now. एक नंबर. You shouldn't talk like that. I have queued this line 3 No. times waiting for you to say this. I don't know why it took so long. Me too. I was waiting. When is he going to say this? Woman, you don't have to worry. Exactly. And that's really the answer. That it's so interesting how fiction and reality interweave and just kind of coexist. And it's a very beautiful thing. So in that moment, I felt extraordinary awe, but I also felt extremely powerful. And it's a very, very beautifully written scene. It's a very sensitively written scene. It's again a scene with a lot of layers and nuance. And yeah, when you watch the film, call me. I'd love to know what you thought about that scene, okay? Sunny sir, hi. This is Upma from Navbharat Times. मैं ये कहना चाहिए कि आप खुद जो हमारा बॉलीवुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसका भी इक्का हैं, आप भी और इवन बॉबी सर भी. आपके बहुत सारे यंग फैंस यहाँ पे आए हुए हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनके लिए अगर आप कुछ ये बताने के चाहें कि जब आपका वक्त नहीं चलता है तब भी खुद पर वो भरोसा रखना कि आपका सिक्का एक दिन ज़रूर चलेगा, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, वक्त तो हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं है. जी बिल्कुल. बस कभी कभी आप सो रहे होते हो, कभी आप जाग जाते हो, और फैंस वेट कर रहे हैं कि कभी वो उठेगा ताकि हम फिर से शोर मचाएं. बहुत प्यार करते हैं सब लोग, ढेर सारा प्यार. Sunny sir, this is Simran Singh from G. इधर थोड़े लेफ्ट थे.
हाँ जी, सबसे पहले congratulations to everyone. Trailer looks really fantastic. Thank you. सनी सर, मेरा आपसे एक सवाल है. जिस तरीके से we love the turnaround with Jat and Border 2 and Gadar 2, everything. Similar, जैसे आपको इतना प्यार मिला, वैसे अक्षय खन्ना को भी इतना प्यार मिला है. And आप इतने साल बाद आ रहे, 29 years later. How do you look upon to his trajectory as well? Because now everywhere he is everywhere. क्या बोल रहे हैं? मैं लास्ट जिस तरह ਤੁਸੀਂ इतना मतलब ਕੀਤਾ मतलब Border 2 जाट है सारा उस तरह अक्षय खन्ना ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ turn around ਹੋਇਆ with Dhurandhar, what do you want to say about it, to his trajectory, and you're coming after 29 years, his career has taken to a new heights. I think it was high time. It was just जैसे मैं पहला भी कह रहा था कि वक्त का कुछ पता नहीं, आपको काम करते रहना चाहिए. Never give up, just keep doing it, and I think that's what Akshay was doing. And when the time has come, and he's now flying high, and he deserves it. Much more, and I'm so happy for him because ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ border ਕੀਤੀ ਸੀ, and that was the first time he was working with me. Neha ਸੀਗਾ. We had a great equation over there because he was Vinod ji's son, and ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ after so many years. Actually, I have not met him before that. Just imagine the gap we had, and it was so lovely. It just felt like going back to the earlier days, and he's a lovely guy. Even on set, the love and respect from his side to Sunny sir is always there. Always there. सत श्री अकाल भाजी, मेरा नाम आरजे अभिषेक फ्रॉम चंडीगढ़. सत श्री अकाल भाजी, गुड इवनिंग एवरीवन. भाजी आपसे पूछना था कि एक पंजाब के लड़के का सिक्का पूरे बॉलीवुड पे चल चुका है. अब ये पंजाब का सिक्का पंजाबी सिनेमा के लिए क्या करेगा एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर इन द फ्यूचर? देखो, जब मेरी गदर फिल्म आई थी ना, लोग कह रहे थे ये पंजाबी फिल्म है, इसको डब करो. ट्रू. उसको कोई खरीद भी नहीं रहा था, तो पंजाबी फिल्म है, ये कौन देखेगा? तो आई थिंक बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑल आर इंडियंस, एंड डेफिनेटली मैं पंजाब दा हैगा, तो पंजाबी मेरा हर किने कैरेक्टरां दे विच पंजाबीपन अपने आप ही आ जाता है. नाले उत्थे दा प्यार इन्ना है कि जद उत्थे जाना हर बंदे नूं यही लगदा कि मेरा बेटा है, मेरा भरा है. बहुत प्यार मिलता है. थैंक यू सो मच बाजी. एंड वन लास्ट क्वेश्चन फॉर तिलोत्मा. हाय तिलोत्मा, जब भी कोर्ट रूम ड्रामा होता है बॉलीवुड की तरफ से या ग्लोबल सिनेमा की तरफ से, तो बहुत सारी इंस्पिरेशन देखने को मिलती है फ्रॉम ग्लोबल सिनेमा और फ्रॉम द बॉलीवुड. आपकी नज़र में कौन ऐसा इंस्पायरिंग कैरेक्टर है फ्रॉम एनी कोर्ट रूम ड्रामा अक्रॉस द वर्ल्ड? There are many courtroom dramas, 12 Angry Men, a film that I love, and there are many like that. But I don't like to watch another film as a reference or an inspiration for a film I'm doing, because then you start wanting to imitate. And because we are human beings, our brains are like sponge, na? Like आप एक sponge को पानी में रखोगे, वो तो पानी खींच ही लेगा. So I prefer not watching. And for this film, the inspiration was the script, my director, my co-actors. But I love the genre of courtroom drama, and I think, yeah. Thank you. का बेटा हूँ, वैसे ही रहूँगा. बस इससे आगे कुछ नहीं. Hello. Hello. Just a second, ma'am. Hi. Yes, sir. My question is to Monica, ma'am. Congratulations for getting these two iconic actors together. Last time when they came together in Border, the film became pan-Indian because before pan-India was a term. So I wanted to ask you, apart from being a cinephile, it brings a lot of nostalgia, but what were your initial conversations with these two actors? Must be very profound and purposeful. And what does it mean for you? I think it's truly special for us to be able to bring them together. And when we got excited about the script and we were all discussing the cast, I think those are the names that Sid had in his mind also. We were also, I mean, we always knew that, we wanted Sunny to play Ikka. And we were figuring out who the other person should be, because it's such a pivotal role and how it plays off Ikka. And that's when we discussed Akshay's name, and we were very excited, and everything just one by one fell into place. I think the entire cast of this film, the entire ensemble, every role you'll see, even the smaller parts, have been played by such fantastic actors. It's a world of these amazingly talented actors. It's a very tight, intense story.
It has a lot of ups and downs and twists and turns, and it really takes you on a journey. So, which is why I said that Ikka is a very special and very big film. One of our biggest, in fact, the biggest Netflix original film. And I hope all of you, जब आप ये film देखेंगे, तो you see it as a strong commercial entertainer, but with a heart and layers and वो जो depth होना चाहिए characters में. Hello. As a retake and it is not something we actually hate one another. Akshay doesn't do retakes. Smartly answered. ऐसा कुछ नहीं था. I mean, it's what we are supposed to do. We are supposed to do, and ऐसा कोई incident ही नहीं था. It's just so. The impact on the screen is so good that's why you're asking me this question. Thank you. Take care. Hello. Hello, this is Vartika. One more last question in. Last question in, please. Thank you very much. Last question in. Hello, this is Vartika from Live Hindustan. सनी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है. आपको और अक्षय खन्ना को स्क्रीन पर देखना हमारे लिए भी एक ट्रीट है. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज एन एक्टर जब आप उनके साथ सीन कर रहे थे तो कोई सीन ऐसा था जो देखकर आप अमेज रह गए? कोई सीन ऐसा था जो देखकर आप अमेज रह गए, मतलब कि आपको देख के ऐसा लगा कि वाओ कितने अच्छे से ये सीन किया है अक्षय ने? देखिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना. कोई एक्टर ऐसे हम एक दूसरे के बारे में कुछ I don't know what to say, but definitely मैं यही कहूँगा कि पूरी पिक्चर आप देखोगे तो we have to amaze ourselves as a full character rather than one scene, because then you will enjoy the film. नहीं तो एक सीन आके निकल जाता पता भी नहीं चलता. Thank you very much, ma'am. Thank you very much.